Hello and welcome to EduGyan. So, dear fellow aspirants, good morning to all of you. So, let us start to discuss some important news articles. These articles are very important for your upcoming Ocs Prelims and mains examinations. So, the delay, let us start the class. Before starting the class, I would like to urge you do subscribe, share, and like so that I'll motivate and I'll provide this type of content for your examinations, and that will definitely help you for your success. So let us start the class. So first article is GS3 Science and Technology, and the source is The Hindu. Brucellosis disease. The topic is brucellosis disease. Recently, an 8-year-old girl from Kuttakal in Malappuram district of Kerala tragically passed away following nearly 2 months for treatment of brucellosis, highlighting the severity of this infectious disease. तो आपको देखिए अच्छे कौन ब्रुसेलोसिस डिजीज रो तार कौन सीवियरिटी रही ताको मैं हाईलाइट करना अछि. First of all, it's a bacteria infection disease. It's a bacteria infected disease. Okay, our species na kono brucella. Clear है ना? Human can contract brucellosis through contacted with infected animals or contaminated animal product. Human beings को मध्य ये disease आसी पारे कहा द्वारा ना जदि से कौनसी infected animal contact थाए बा कौनसी contaminated animal product यूज करता है ताले आमुक मध्य ये disease हमारा समान होची. Symptoms कौन रहिबो ना मिल स्टार्टिंग ରୁ मिल रहिबो. Okay. Prevention method include vaccination and pasteurization of milk. Okay, our prevention is vaccination and pasteurization of milk. कि यदि एडिशनल डिटेल देखिबा ब्रुसेलोसिस डिजीज टा प्राइमरली एफेक्ट करे इस लाइवस्टॉक मन क्षेत्र को कहते रे कैटल्स, स्वाइन, गोट्स, शीप, डॉग्स एटसेट्रा. ओके, ह्यूमन्स को मध्य ही पारे इनफेक्ट ही पारे थ्रू वेरियस मीन्स विथ अनपास्चराइज्ड मिल्क. अब यदि अनपास्चराइज्ड मिल्क खाइबा ताले कोन हम हमके डिजीज और बहुत चांसेस अछि. चीज इस बने गुडे कॉमन सोर्सेस. सिम्पटम्स कोन रहिबार अछि फीवर रहिबो, वीकनेस लागिबो, वेट लॉस हमको लागिबो. ओके, डिस्कम्फर्ट फील हबो. ओके, तो ये भलिया 1 वीक रु 2 मंथ पर्यंत फील हबो. अच्छा, एतरे हाई रिस्क इंडिविजुअल की अछंती ना फार्मर्स, बचर्स, वेटरियंस, लैबोरेटरी पर्सनल्स. ओके, जो माने कि फ्रीक्वेंटली दे आर कम कांटेक्ट विथ दिस एनिमल्स. ओके, ट्रीटमेंट करिया समय एंटीबायोटिक यूज करिवा. प्रिवेंटिव मेजर कोन ही पारे ना वैक्सीनेशन ऑफ द लाइवस्टॉक मानकर वैक्सीनेशन निहा दरकार. एंड एंसरिंग द पास्चराइजेशन ऑफ द मिल्क. जो मिल्क हम खाउ जो दैट शुड बी पास्चराइज्ड मिल्क दरकार. ओके, तो ये तला आपनकर न्यूज आर्टिकल्स. नेक्स्ट देखिवा सेकंड आर्टिकल रही GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रही कौन रही न्यूक्लियर एनर्जी मिशन NEM. ओके, यूएन बजेट 25-26 इंट्रोड्यूस करछन गोटे न्यूक्लियर एनर्जी मिशन. आर मेन एम कौन रही ना टू डेवलप एटलिस्ट 5 इंडिजिनियस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बाय 2033. 2033 सुधा 5टा इंडिजिनियस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को डेवलप करिया कि जोटा कौन इंडिया जो न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ेवार अछि. टार्गेट कौन रही 2047 सुधा आम 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करूँ. तापाई 20,000 crore एलोकेट कराई. ओके, विथ पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन पीपीपी मोड काम हम. ओके, तो किसी एडिशनल डिटेल रही देखो. एक्सपांशन ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी.
एबे केते रहिछि हमर टार्गेट हम केते अछि कैपेसिटी हमर 8180 मेगावाट 8880 मेगावाट रहिछि टार्गेट रहिछि कि 31 20 31 32 सुधा 2031 32 तक बढ़ई कि 22480 मेगावाट करिया पे 10टा रिएक्टर आपनकर आमे कंट्रीब्यूट करिवु ओके पाखपाखि 8000 मेगावाट रो आपनकर कोन एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी आमे जनरेट करिवु को स्टेट रे ना स्टेट लाइक गुजरात राजस्थान एंड तमिलनाडु ओके तो कौन रही था ना भारत स्मॉल रिएक्टर बीआरएस 220 मेगा एमडब्ल्यूई आर मेन एम कौन रही सेकेंड कौन रही प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर रही जोड़ा आप कल्पकम ये हम ओके तो ये थी आपंकर नेक्स्ट आर्टिकल नाउ कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस कौन रही ना इंडिया मस्ट एड्रेस इलीगल इमिग्रेशन विथ एम्पैथी एंड अर्जेंसी ओके इंडिया को आमर जो इलीगल इमिग्रेशन पॉलिसी रही यूएस रो ताकू हमको प्रॉपर्ली एड्रेस करिया पड़ियो ओके सोर्स कौन रही ना द हिंदू सोर्स रही कौन रहा देखो तो आर्टिकल देखो कौन आसतु द रिसेंट सर्ज इन डिपोटेशन ऑफ इंडियन नेशनल्स फ्रॉम यूएस has brought the issue of illegal immigration to the forefront एबे जो यूएस गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट से जो डिपोटेशन को बहुत मात्रा बढ़े दी ओके कि जोटा कि बहुत सारा इंडियंस माने जो माने कि ओके सो इंडिया को मध्य स्टैंड नवा पड़ो ओके रिसेंटली जो इंडियन नेशनल्स यूएस रु डिपोर्ट होउचंती एटा गोटे बहुत बड़ कंसर्निंग विषय ओके जो देखंतु significant number of Indians are attempting to migrate illegally due to economic hardship, especially from state like Gujarat, Punjab, Haryana. गुजरात पंजाब हरियाणा रो तो किछ लोक माने अछंती जो माने कि ड्यू टू देयर इकोनॉमिक हार्डशिप देयर फोर्स टू लीव द कंट्री ओके तो से माने जे कि देश छाड़ी कि यूएस को माइग्रेट हेचंती तो पुणी से को जो डिपोर्ट करा हो यूएस टू इंडिया को ओके तो ये बहुत बड़ कंसर्निंग चैप्टर लेसन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया approximately 7,25,000 undocumented Indians reside in the US 7,25,000 इंडियंस माने जो माने कि अनडॉक्यूमेंटेड हिसाब रे यूएस में दे आर इलीगल माइग्रेंट्स जोटा कि ए पास्ट 3 ईयर रे बहुत मात्रा बढ़ी गत 3 वर्ष बहुत मात्रा बढ़ी जतर डिटेल देखिबा आप जानि कि हमर जो लीगल पाथवे कोटा आपण जो H1B1 वीसा ओके H1B वीसा होची लीगल कि जोठी कि स्किल वर्कर मानन को स्टूडेंट्स पर को मिलते हैं वीसा तो जो माने जाती यूएस जाती तांकर लर्निंग कंप्लीट करिया पाई बा तांकर जॉब पाई ओके तो जो देखिबा ए डिपोटेशन टा 400% लास्ट 3 ईयर हेछि ओके 2021 मसिया रे 292 केसेस थिला बेले 2024 मसिया रे बढ़ी कि 1538 माने 1538 जन इलीगल से यूएस जाइछथि तो एटा गोटे बहुत बड़ इंपैक्ट पकाउछ हमर लेबर मार्केट ऊपर कोन होछ ना तो डिपोटेशन ऑफ इंडियन वर्कर्स कुड क्रिएट लेबर शॉर्टेजेस इन सेक्टर लाइक कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटैलिटी एटसेट्रा ए सब सेक्टर कोन होछ गोटे लेबर शॉर्टेज देखाउछ इंडिया रे ओके तो ये गोटे बहुत बड़ कंसर्निंग चैप्टर आकु मध्य एड्रेस करिया पड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नेक्स्ट आर्टिकल देखिवा ओके GS3 इकोनॉमी द हिंदू सोर्स कौन रही ए बजेट दैट इज मोस्टली गुड बट विथ वन रॉन्ग मूव ओके तो ये कौन कह द राइटर चाहिए कहया पे
कि बजेटा बहुत क्षेत्र भल अच्छी किंतु गोटे रंग मुवमेंट तार रही कौन देखा लेखकर कौन कनसर्न रही से कौन कहले द यूनियन बजेट द हिंदू रोचे आपंकर सोर्स अच्छी द यूनियन बजेट 2025-26 सिग्निफिकेंट बजेट जार एम कौन रही टू एनहांस द कंट्रीज इकोनॉमी तो हाउ वी कैन इम्प्रूव और हाउ वी कैन एनहांस द कंट्रीज इकोनॉमी तार मेन कनसर्न की रही डेवलपमेंट की भी हो ओके आम टैक्स स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर तो फिस्कल कंसोलिडेशन को मैनेज कराई ओके किपरि भाव में जीडीपी इनक्रीज कराई पार ओके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर केमी हम तो यू जिन अधिक फोकस कराई फिस्कल ट्रांसपेरेंसी पर फोकस कराई नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ को प्रेजेंट कराई नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को प्रेजेंट कराई 10.1% रही ओके सपोर्ट फ्रॉम बोथ कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर तापरे किसी स्ट्रक्चरल शिफ्ट रही इनडायरेक्ट टैक्स को लेकिन डायरेक्ट टैक्स को लेकिन ओके कि जोटा विथ डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज कराई 52 ରୁ 59% ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जोटा 59% ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू करा जीवो ओके तो फिस्कल ट्रांसपेरेंसी इन्वेस्टमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषकर एआई को आम किपर अधिक एम्फासिस करूँ फोकस कराई किसी एडिशनल डिटेल देखा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जोटा 2025 एस्टिमेट केते कराई ना 11.2 लाख करोड़ को स्लाइटली राइज गत वर्ष अपेक्षा गत वर्ष 11.1 लाख करोड़ तक बढ़े की 11.2 लाख करोड़ कराई विशेषकर कौ क्षेत्र में ना बूस्ट करवा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल क्षेत्र में किपर अधिक इन्वेस्ट हो पार आउ सस्टेनेबल ग्रोथ को एम्फासिस कराई ओके कंसर्न कराई ओवर फिस्कल ट्रांसपेरेंसी the abandon of the fiscal deficit glide path raises questions about government commitment to fiscal discipline relying on various debt to GDP scenarios without to specific target create ambiguity of fiscal planning तो जो फिस्कल ट्रांसपेरेंसी पर अधिक गुरुत्व कराई ओके तो नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल्स देखिवा कौन रही यस GS2 गवर्नेंस द हिंदू सोर्स प्रसाद स्कीम व्हाट इज प्रसाद प्रसाद इज द pilgrimage rejuvenation and spirituality augmentation drive जोटा कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा 2014 ले ये स्कीम को ये स्कीम रो मेन एम कौन थिला टू एनहांस कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल ट्रैवल टू डेजिग्नेटेड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस जोटा हमर डेजिग्नेटेड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन रही ताकू आमे किपरि तार कल्चरल प्रिजर्वेशन को एनहांस करिवा ओके तार मेन एम थिला तो टी कौन रही न्यूज रे पार्लियामेंट्री कमिटी ये अर्ज करछन्ती गवर्नमेंट को टू एस्टैब्लिश ए क्लियर कट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर एसओपी गोटे क्लियर कट एसओपी करिया पाई कोन पाई द नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम रेलेवेंट अथॉरिटीज टू एंश्योर द टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट आस्ता को टाइमली केमती एग्जीक्यूट करा हबो प्रसाद स्कीम रे ओके ऑब्जेक्टिव्स कौन रही ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट करा हबो रिगार्डिंग पिलग्रिमेज साइट को लेकिन रोड्स करा हबो वाटर सप्लाई रहिबो जो पिलग्रिमेज साइट रही सैनिटेशन व्यवस्था रहिबो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम रहिबो ट्रैवल कनेक्टिविटी थ्रू कनेक्टिविटी करा हबो इंप्रूव रोड रेल एयर कनेक्टिविटी रहिबो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कौन रहिबो ना प्रिजर्व करबा कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस जो पिलग्रिमेज साइट अच्छी तार कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस केमती प्रिजर्व करिया परिबो ओके सब जिनस एमती सस्टेनेबल प्रैक्टिस हो पार इको फ्रेंडली हो पार तापर अधिक गुरुत्व दिखाई
सो देखिबा नेक्स्ट आर्टिकल कोन रही नो सो दिस इज द articles all articles I have discussed तो आशा करे आज लेक्चर बहुत फायदामंद थी आपण जदि लेक्चर टी भल लगी डेफिनेट लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि प्रत्येक दिन भल कंटेंट आप आनी पारि सो आज ये जय हिंद जय जगन्नाथ।